Yes, hello everyone. Here is my fourth video on investment decision and capital budgeting. And in my previous video, I have already discussed the concepts of capital budgeting and investment decisions and two non-discounting techniques of capital budgeting. That is payback period method, and one I have discussed, that is accounting rate of return or average rate of return. Now we will discuss net present value method, and it is discounted technique of capital budgeting. Okay, so let's start now. Yeah, net present value is a discounted cash flow method that considers time value of money in evaluating capital investment. That means net present value is a discounted cash flow method और and it take into consideration, ये क्या consideration लेता है, it take into consideration the time value of money. Okay, and in this method of calculating the present value of cash flow, that is inflow and outflow of investment proposals, we use cost of capital as in discounting rate. So what we got it here, number one, it is a discounting technique. Number two, it take into account the time value of money. And third, it takes cost of capital as a discounting rate. Okay. So in net present value method, what we need to take out? Suppose the future value is given and we need to take out the present value. Okay. And from that, we will take out the net present value. Okay, it will be more clear in my next slides. Net present value will be more clear from this. See, first let me explain what present value first. See, suppose somebody is giving you, your friend says that मैं आज आपको 1000 rupees दूँ या मैं future में 1000 rupees दूँ एक साल बाद. Tell me which one is a better option now at least. तो आप क्या बोलोगे? नहीं 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 नहीं, कल नहीं, आपको मेरे को 1000 अगर आप आज दे रहे हो ना, मुझे आज ही दे दो. तो which option you will choose? You will choose present option. You will choose today option, नॉट फ्यूचर. इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज टुडे इज सर्टेन. आपके दोस्त दे रही है, ले लो, कल पता नहीं देगी या नहीं देगी. सेकेंड, इन ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑल्सो यू विल टेक दैट 1000 टुडे, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर फॉल हो जाता है. इन फ्यूचर में टुडे 1000 में हम जितना परचेजिंग कर सकते हैं, फ्यूचर में 1000 में क्या होगा, उससे कम परचेजिंग होगी, उसका परचेजिंग पावर फॉल हो जाएगा. यस, सो विच ऑप्शन यू विल चूज? You will choose the present option. Okay. Now suppose future value is given 550. आपको एक साल बाद अगर 550 रुपया मिल रहा है और आपने कुछ बैंक में डाला था प्रेजेंट वैल्यू 10% डिस्काउंट में. सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 550 का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 500 रुपीज है. क्यों? क्योंकि 500 पे आपको 10% इंटरेस्ट मिला, तो आपको फ्यूचर में 550 मिला. अब अगर आपके सम में फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, देन यू नीड टू टेक आउट द प्रेजेंट वैल्यू. ओके. And we also know that present value equals to future value by 1 plus r bracket में to the power n, where r is rate of interest and n is number of years. So when you need to find out the present value, then future value will be given in the sum, rate of interest will be given in the sum, and number of years will also given in the sum. Then you will able to take out the present value. Now next, what we will do and how we will calculate, just see the format. Okay, this is a format how to calculate net present value. Okay, see what we will do. First we will have year column, then cash flow column, then discounting factor column, and then present value column. We have already done this in time value of money also, in which we have find out the present value. If you have seen my that video, it will be clear to you, it will be more clear to you. Okay, now you see, year में we will write all the years. Suppose there are 3 years, then all the years. Now initial investment जो भी आपका है किसी asset पे, that we will always take 0. Why? क्योंकि जिस दिन आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी दिन को हम ईयर में लेंगे, तो उस दिन में आपका ईयर क्या होगा? 0. एंड देन फर्स्ट ईयर व्हेन यू विल गेट सम कैश इनफ्लो, जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर जो भी कैश इनफ्लो आएगा, वी विल राइट ईयर. एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हमारा कैश बाहर जा रहा है, सो वी विल पुट इट इन ब्रैकेट बिकॉज इट इज अ नेगेटिव value. Okay, now what we will do, we will calculate the discounting factor. That is, it will be given 10%, 15%, and already you know I have also explained the present value factor table, or the other name is discounting factor table. So from there we will take out the value on the basis of year and percentage.
and then finally we will take out the present value. Okay, so let us see how we will do. And now see, decision rule. If net present value will be greater than 0, then we will accept the project. That is, NPV must be greater than 0, then only we will accept the project. If NPV is less than 0, we will not accept the project, we will reject the project. Okay, yes or no? We will reject the project. And now how we will find the present value? You know very well. Whatever will be the discounting factor. For initial investment 0, the discounting factor is 1, and rest we have to take out. 10% होगा या whatever the percentage will be given. So यहाँ पे what we will do, cash flow into discounting factor equal to present value we will take out in all. Okay, and then ultimately जो नीचे के होंगे सारे प्लस होके initial जो भी होगा initial investment will minus, and we will get the NPV. That is, initial investment minus present values is NPV. Okay, now this will be more clear from this sum. Our problem number 1. See what is given. Calculate NPV of 2 projects. दो प्रोजेक्ट है, उनका हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड सजेस्ट विच ऑफ द 2 प्रोजेक्ट्स वुड बी एक्सेप्टेड गिवन डिस्काउंटेड 10%. यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 प्रोजेक्ट है और हम लोग को सजेस्ट करना है कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए और कौन सा डिस्काउंट रेट क्या है? 10%. सो वी विल कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट एंड देन फाइनली वी विल सी किसकी एनपीवी ज्यादा है. वी विल सजेस्ट दैट प्रोजेक्ट ओनली. लेट्स सी, हियर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज गिवन. एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years. 5 years. इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, इसमें स्क्रैप वैल्यू दिया है. ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एस्टिमेटेड लाइफ दिया है, स्क्रैप वैल्यू में सिर्फ प्रोजेक्ट बी का है, ए का नहीं है. देन ईयर लेट अस कैलकुलेट इनफ्लो. किस तरह से कैश आ रहा है ये सब में दिया हुआ है. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. देखो फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट ए में 60,000, बी में 80,000, ए में 60, बी में 1,30,000, ए में 90, बी में 1,50,000, इसमें 90,000, इसमें 1,70,000, इसमें 1,10,000, and the fifth year 1,70,000. So cash inflows for both the year is also given. Now PV factor at the rate 10% discount. See PV factor मैं already I have taught you how to take out from the table. If you remember, मैंने बोला था ना कि टेबल होते हैं PV factor के. तो PV factor means present value factor या discount value factor के टेबल होगा. उसमें आपका in the above, yeah, in the horizontal column above it is the rate of interest. In the vertical column at the side they will be giving you the years. So जो भी rate of interest होगा, जो year होगा जहाँ पे दोनों intersect करते हैं वहाँ से PV factor निकालते हैं. And PV factor will also given in the sums. I hope the PV factor will be given in the sums itself in this case. और अगर sum में नहीं दिया हुआ रहेगा, I will teach you how to take out from the calculator. So you see the PV factors for first year, second year, third year, fourth year and fifth year at 10% discount it is given. Okay. Now let us move to the next slide for the solution. See how we will solve. First we will do project A and then project B. And मैंने already आपको ये table format बताया था कैसे बनाना है. पहले year लोगे, फिर cash inflows लेंगे, then PV factor कितना परसेंट था वहाँ पे नीचे 10% दिया हुआ था, 10%. Then we will take out the present value हम लोग को निकालना होगा. इस प्रोजेक्ट ए में बी में भी आपको ईयर्स है, कैश इनफ्लोज है, पीवी फैक्टर 10% दिया हुआ है एंड प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है. सी तो मैंने बोला था सबसे पहले कैश इनफ्लो में हम क्या लेंगे, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो इन केस ऑफ प्रोजेक्ट ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 lakhs वी हैव टेकन. अब 3 lakhs को ब्रैकेट में डाल रहे हो क्योंकि वो कैश बाहर जा रहा है, नेगेटिव, इट इज गोइंग आउट. अब उसके बाद फर्स्ट ईयर में आपको कितना कैश इनफ्लो आया, कितना कैश आया, 60,000 आप लिख दो. सेकेंड ईयर में कितना आया, 60,000. थर्ड ईयर में 90,000, फोर्थ ईयर में 90,000, फिफ्थ ईयर में यू हैव 1,10,000 कैश इनफ्लोज. ये भी सम में दिया हुआ है, आप देख लेना. अब पीवी फैक्टर फॉर 0 ईयर एंड 10% में इज 1, ऑलवेज 1. नाउ पीवी फैक्टर फॉर 10% और इन द फर्स्ट ईयर आप टेबल से भी देख सकते हो या आपको जो वैल्यू सब में दी हुई है आप वहां से देखना, इट इज 0.900. देन सेकेंड ईयर 10% सेकेंड ईयर के लिए है 0.826, 10% थर्ड ईयर के लिए होगा 0.751, 10% फोर्थ ईयर के लिए होगा 0.683, 10% एंड फिफ्थ ईयर के लिए होगा 0.621. व्हेन यू राइट द पीवी फैक्टर आल्सो फ्रॉम द सम्स, then we'll find out the present value. Then 3 lakhs into 1 equals to bracket में रहेगा negative value 3 lakhs. Okay. Then 60,000 into 0.901 equal to 54,540. Again 60,000 into 0.826 equal to
49,560. 90,000 into 0.75 equal to 67.590. 90,000 into 0.683 equals to 61,470. 1,10,000 into 0.621 equal to 68,301. Now this is your negative value and this all are your positive values. So add all this and then minus from 3 lakhs. So ultimately what we will get? We will get plus 1,470. So your net present value for project A is 1,470. 3 lakhs minus all these values. We will find NPV is 1,470. Okay. Now next in project B. See the years are given 0, 1, 2, 3, 4, 5. So in the what was the initial investment for project B? It is given in the sum 5 lakhs. And why it is in bracket? क्योंकि cash बाहर जा रहा है. So it is negative. Again we see that first year का cash inflow जो project B का था 80,000, second में 1,30,000, third में था 50,000, 1,70,000 and fifth में भी 1,70,000. And हमने वहाँ पे एक चीज और देखा था, scrap value भी था. Scrap value कितना था? 2,000. And you know scrap value हमेशा last में होता है. So what is our last year? That is fifth year. So you will write here scrap value in the fifth year 2,000. It is your scrap value. Then you will mention fifth year and again in fifth year you write scrap value 2,000. Now PV factor at the rate 10%, it is given in the sum. For 0 year 10% PV factor is always 1 and for 1 year 10% PV factor is this, and for 2 year PV factor 10% is 0.826. For 10% at third year the PV factor is 0.751. It is given in sum. For 10% fourth year is 0.683 and for 5 years 0.621 and for again 10% for fifth year for scrap value it is also 0.621. It's done. Now what we will do, this 5 lakh which is negative equal to negative 5 lakhs rupees. Okay, here it will come. Then 80,000 into 0.90972,720. Then again 1,30,000 into 0.826 equal to 107,380. Then 1,50,000 into 0.751 equal to 1,12,650. Again 1,70,000 into 0.683 equal to 1,16,110. Again 1,70,000 into 0.621 equal to 1,05,570. Again 2,000 into 0.621 equal to 1,242. So what is our net present value? When from the 5 lakhs we will total this and we will minus, we will get 15,672. So 15,672. Now tell me which we will accept. Obviously we will accept the project B with the highest NPV value, that is 15,672 we will accept, and it is more than project A. Is it fine? अब suppose आपकी सब में PV factor नहीं दिया है और exams में table भी नहीं provide किया, then how you will take out? Then in your calculator what you will do? How we will do? We will write like this. First you write in your copy 1 by 1 plus r to the power n. Then 1 by 1 plus. If it is 10%, then how much it will come? 0.10. How? 10 by 100. Yeah, we do know 10 by 100. If it is 10%, then you will write 10 by 100 equal to 0.10. Okay. Then see here 1 plus 0.10. Okay. 1 plus r to the power n is 1. So it is 1 by 1.10. So it will come 0.909. In calculator it will come. When it comes in calculator, then for the second year what you will do? You will press equal to. Then you will get the second year value, that is 0.826. Again you will press equal to. Then you will get 0.751. Again you will press equal to. Then you will get 0.683. Again you will press equal to, you will get for the fifth year 0.621. No need to calculate again and again. सिर्फ फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना है ऐसे करके, उसके बाद इक्वल टू करोगे तो वैसे वैसे हर साल का आता जाएगा. यस. एंड इफ इट्स 11% देन व्हाट यू विल डू? 11 by 100. It will come 0.11. ठीक है. Then ultimate 1 by 1 plus 0.11 is 1 by 1.11. Then ultimately whatever you will get, you will do equal to, you will get all the PV factors. Okay. Then it's done, I think. Yeah. So our discussion on PV factor and PV net present value is done, and I must tell you the project with highest NPV will be accepted, and NPV greater than 0 will be accepted, but less than 0 will be rejected.
So I hope this will help you to understand the net present value, and if you like, please share and subscribe my channel. Thank you so much.